Hello student, how are you? I am Rajesh Mahant, teacher of Sentence High School Ghargoda, and I will teach your computer subject. So student, let us start our class. Dear student, today we will learn chapter first, Introduction of Computer. So let us understood what is computer. As you know that the computer is an electronic machine made by man. It is made up of various parts that help you to enter data, input process, its CPU, store it, memory and given the result output. Let us understand the process of input, processing and output with a daily life example of preparing mango shake. Mango pulse plus sugar plus milk when we input the mixture machine. After putting mixture machine, sharing by mixture processing and we get mango shape output. सेम ये इसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है। जब हम कीबोर्ड पर कोई भी की को प्रेस करते हैं तब वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होकर हमको मॉनिटर पर वो शो होता है। व्हाट इज कंप्यूटर मेड ऑफ? अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डेट यू कैन सी और टच। हार्डवेयर को हम ये देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। द सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम, set of instruction given to a computer that perform same. Take in your computer. When you start your computer, the software also start with it. Some of popular software are MS Windows, MS Office, WinZip, CorelDRAW and above Photoshop. This is a very popular software. Input device, processing unit, storage device and output device are all example of computer hardware. Input device help you in entering data, processing unit help to control the function of computer, storage device help to the store of data, output device help of display the output. So have you understood student what is hardware and what is software of computer? Hardware refer to the part of a computer that you can see or touch. For example, CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner, microphone are this example. And software refer to a set of program, a set of instruction given a computer that perform some task in a computer. और जैसे ही हम हार्डवेयर को जब हम स्टार्ट करते, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ ही सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Entering data refer to a collection of fact file. Your name, address and telephone number. Data can be entered into the computer, for example by typing it in using a keyboard. The total entered is called the input. Entering data, जो भी हम डिटेल्स अपना कंप्यूटर में हम देते हैं, इंटर करते हैं, वो सारे इंटरनिंग डाटा होते हैं जो कि एक फाइल में जाके वो सेट होता है, सेव होता है वो। इनपुट डिवाइस, डाटा और इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड into a computer with the help of input device
Common example of input device are the keyboard and the mouse. जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं उसके लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है, जो कि एक हार्डवेयर होता है, वो है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के हेल्प के द्वारा हम कंप्यूटर में जो है डाटा को हम इंटर करते हैं। कीबोर्ड, अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ की। यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग इट्स की। बाय यूजिंग द कीबोर्ड यू कैन टाइप लेटर, नंबर, सिंबल्स एट्सेट्रा। कीबोर्ड आप सभी ने देखे होंगे। इसमें जो है न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिकली सारे नंबर रहते हैं, साथ साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं कीबोर्ड पर। Mouse. Next input device is mouse. A computer mouse is normally connected by a cable to a computer. It helps to point the thing on the computer monitor. The most commonly used mouse in the scroll mouse that has two buttons and a scroll wheel at the center. Irregular mouse had a ball at the bottom to track the movement of the mouse on the surface. Nowadays, the optical mouse is the most commonly used. There is a light source at the bottom instead of a ball to sense movement. You can see here the important mouse action are here. First, click. To click gently, press the left mouse button once and release it. This is used to select an item on the monitor. Second, double click. To double click gently, press the left mouse button twice within a short period of time and release it. This is used to open and file a folder or a program. Third, right click. To right click, press the release the right mouse button. Right clicking the mouse shows a list of commands. And drag and drop. Use the drag and drop method to move an item from one position of another on the monitor. The steps of drag and drop are: first, point of mouse to any item on the monitor and press or hold the left mouse button. Second, holding the button drags the item of the position where you want the item to be placed. And second, release the mouse button. There is a type of mouse action. Now we will see processing data. Performing calculation of comparing data is called processing. Processing is an action taken on data to convert it into meaningful information. For example, if you want to add two numbers such as 85 and 70, then you should type in the numbers and give the instruction to add. Then the computer will process this and show the result as 155. Now here is given CPU. It stands for Central Processing Unit. It controls all the function of a computer. Thus, the CPU is also called the brain of a computer. The CPU is also called the brain of a computer. It consists of three parts. First, the arithmetic and logic unit, short form this ALU. Second, the control unit CU, the registers, and arithmetic and logic unit ALU. The ALU performs all the arithmetic calculation and logical comparison. The arithmetic calculation include addition, subtraction, multiplication, division, and modules. The logical comparison include greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to and not equal to. Now here is given control unit. Student, you can imagine
ascends at a crossroad without any traffic signal or policeman. If there are no traffic signal or policeman, then everyone would be moving at the same time, and soon this would result in a traffic jam. The traffic policeman or signal control the movement of vehicle and maintain order. Similarly, the control unit control the movement of information between the registers, the ALU of other part of computer. Control unit control the movement of information between the register, the ALU and other part of computer. Remember, student. Now here is given registers. Registers are the small memory unit in the CPU where all the data to be processed and stored. It helps the ALU. ALU means arithmetic logic unit to easily access data for calculation, and help to the CU means control unit to pass the data on to other part of the computer rapidly. It is also used to get back to retrieve the information stored in the computer memory. This is a register. Now we will see streaming data. Student, do you know pen drive? Yes, a large amount of data can be stored in computer. The data entered into a computer is stored in its hard disk. When given the instruction to save it, in addition to the hard disk, CD-ROMs, DVD-ROMs and पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जिस प्रकार हम पेन ड्राइव में हम डाटा चाहे ऑडियो, वीडियो, PDF फाइल, जो भी किसी भी चीज़ को हम पेन ड्राइव में हम स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली, उसी प्रकार कंप्यूटर में CD-ROMs होते हैं जो कि डाटा को और बहुत ज़्यादा डाटा को वो अपने में स्टोर करके रखे रहते हैं। नाउ वी विल सी आउटपुट डिवाइस। The result given by the computer after processing the data is called the output. An output device show or plays the result after processing the input. Monitors, printer and speaker are some example of output device. So let's know about of output device. First, monitor. A monitor looks like a television screen. You can see here, student. The monitor is also known as VDU, means visual display unit. It displays the result of the task performed by a computer. You can also watch movie and cartoon films on a monitor. The output device on a monitor is called the soft copy. The output displays on monitor is called the soft copies. Second is printer. Printer is also output device. The printer gives the output as printout. The output that is print on paper using a printer is called the hard copy. प्रिंटर जो होता है जो कि पेपर का यूज़ करके हमको प्रिंट आउट देता है, जो कि हार्ड कॉपी होता है। नाउ वी विल सी स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन ए कंप्यूटर. लेट अस नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर. स्टार्टिंग द कंप्यूटर. द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट a computer are given below. You can see here this picture. First step, switch on the power supply, and second, switch on the UPS. Third step, switch on the power button of the CPU cabinet. CPU को हमको स्टार्ट करना है, CPU का बटन को थर्ड स्टेप में. फोर्थ स्टेप, स्विच ऑन द मॉनिटर. हमको फोर्थ स्टेप में मॉनिटर का स्विच को स्टार्ट करना है. A screen similar
to the one given above will appear. It is called the desktop. अभी हमने ऊपर में देखा कि डेस्कटॉप को किस प्रकार से हमको स्विच ऑन करना है. नाउ हियर वी विल सी हाउ टू शट डाउन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर. The step of shut down a computer are as follows. First step, click the start button. अब डेस्कटॉप में नीचे में रहता है स्टार्ट बटन, उसको हमको क्लिक करना है. देन नेक्स्ट स्टेप, a menu list of options displayed on the screen from which one of more option can be selected will appear. क्लिक शट डाउन ऑप्शन. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ. थर्ड, द मैसेज लॉगिंग ऑफ एंड देन शटिंग डाउन विल अपीयर इन अ फ्यू सेकेंड. इट रन ऑफ द CPU नाउ. स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर. एंड फोर्थ स्टेप, स्विच ऑफ द UPS बटन. चौथे स्टेप में हमको UPS का बटन को हमको स्विच करना है. नोट, द मेन पावर सप्लाई इज यूजली केप्ट ऑन टू कीप द UPS इन अ चार्ज स्टेट. द पावर सप्लाई में बी स्विच ऑफ ओनली इफ यू आर गोइंग अवे ऑन द हॉलीडे फॉर मोर देन ए डे और 2. जब हम मेन सप्लाई बटन को हमको तब यूज करेंगे जब हम अपने घर से जो है 1-2 दिन के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं. अदरवाइज हमको जो UPS बटन को है हमको ऑन ही रखना है ताकि वो चार्ज होते रहे. यूज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर इज नाउ यूज टू मेक ड्राइंग, सॉल्व सम, प्ले गेम्स एंड लिसन टू द म्यूजिक. इट इज ऑल्सो यूज द परफॉर्म वेरियस टेक द schools, officers, railway station, airport, hospital and banks. You will learn more about of application of computer in higher classes. So I hope student all of you understood about of introduction of computer.